minus 25 minutes. ROZ control, event number 432 completed. Roger. This is Vehicle Director. Automatic launch sequence authorization command is issued. ALC Roger. ALC Roger. नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा में मैं विकास स्वर्णकार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम तैयार हैं भारत के विकास की ओर एक और कदम बढ़ाने के लिए। आज 28 फरवरी 2021 को PSLV C51 अमेजोनिया 1 मिशन का प्रक्षेपण प्रथम प्रमोचन मंच से होने जा रहा है। यह इस वर्ष का प्रथम प्रमोचन है। इसका प्रक्षेपण भारतीय मानक समय के अनुसार 10:24 पर किया जाएगा। इस प्रमोचन यान PSLV C51 के साथ मुख्य उपग्रह के रूप में ब्राजील के अमेजोनिया 1 तथा 18 अन्य सहयात्री उपग्रहों का प्रमोचन किया जा रहा है। Good morning and a hearty welcome to all the viewers. I am Madhuri welcoming you to the launch event of PSLV C51 Amazonia 1 mission being telecast live on DD National from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, Andhra Pradesh, the spaceport of India. The launch will take place today, the 28th of February 2021 at 10:24 hours Indian Standard Time from the first launch pad. The live telecast is also available on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. The PSLV C51 will launch Amazonia 1 satellite weighing 637 kgs in 752 kilometers circular sun-synchronous polar orbit with 98.48 degrees inclination and the 18 co-passenger satellites in the respective orbits. TC, SHAR 1 and 2 confirms normalcy of both telemetry carriers. काउंटडाउन शुरू हो चुका है करीबन 25 घंटा पहले और क्रमबद्ध तरीके से सभी कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर अभी चेयरमैन ISRO डॉक्टर के शिवन, PSLV C51 अमेजोनिया 1 अंतरिक्ष विभाग के अधीन भारत सरकार के कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनसेल का प्रथम समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। स्पेस फ्लाइट इनकॉर्पोरेशन USA के साथ वाणिज्यिक व्यवस्था के तहत एनसेल इस मिशन पर कार्यरत है। We bring to you the glimpses of integration activities of the PSLV C51 at the first launch pad. BI in ALS mode. The campaign begins with the flagging off of nozzle end segment and core base shroud by Director SDSC Shar. The segment is brought to the launch pad and is lifted and precisely placed on the mobile launch pedestal. The PS1, the first stage, comprises of 5 segments. The nozzle end segment, 3 similar middle segments topped by the head end segment.
These segments Control are event completely 443. cast, processed and prepared in special facilities Minus at the 20 spaceport with I utmost request regard all to stations quality and change over safety to channel 2. and COVID-19 protocols for the safety of personnel. PSC to control event number 444. There you are seeing the hosting of MS1, meticulous preparations there. These motors thrive high pressure combustion gases on the inside and high relative velocity air on the outside. PS2 stage is cleared for PSLV C51 mission. The MS3 and now you can see the HES being lowered onto the built-up of the core stage. The DL version of PSLV has two strap-ons. The first among the two strap-ons, fully assembled in a separate facility, is being brought to the launch pad. It will be tilted from horizontal to vertical and precisely lowered to integrate with the main Minus motor. 19 minutes. COT to ROD. Here you can see the All second tracking strap-on systems are also ready being for lowered for PSLV integration with the motor. C51 mission launch. अब आप स्क्रीन पर नोजल का द्वितीय चरण के नोजल का परीक्षण देखते हुए TS2 स्टेज को लॉन्च पैड लाया गया और इसे क्रेन की मदद से हॉइस्ट कर प्रथम चरण के ऊपर में संलग्न किया जाएगा। PDP to ROD, mission computers and real-time network are ready for PSLV C51 यह Amazonia 1 कार्य mission बहुत launch. ही धैर्यपूर्वक और सतर्कता के साथ किया to जाता ROD, है। range safety systems अब are ready देख for रहे the हैं launch of PSLV C51 तृतीय और Amazonia 1 चतुर्थ mission. चरण संलग्न हो चुके हैं और एक यूनिट बनकर CNC to TTC director. लॉन्च पैड में लाया जाएगा Readiness for the launch support of PSLV C51 Amazonia. और इसे अब संयोजित कर दिया गया है। Roger. Minus 18 minutes. तृतीय और चतुर्थ चरण द्वितीय चरण के ऊपर में संयोजित होता हुआ All the system parameters of PSLV Checkout cables C51 connect कर दिए launch गए हैं। vehicle are normal and within और अब आप specifications. देख पा रहे हैं The launch यह है vehicle is अमेजोनिया ready for 1 PSLV C51 उपग्रह Amazonia 1 mission. जिसे पेलोड Mission अडेप्टर Director के Roger. ऊपर में संयोजित कर परीक्षित कर लिया गया है और इसे कंटेनर के अंदर सुरक्षित कर लॉन्च पैड ले आया गया है। अमेजोनिया 1 को पेलोड अडेप्टर के साथ संयोजित कर इसे सुरक्षा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया गया। यह आप देख रहे हैं एमएसटी टावर, उसे पीएसएलवी C51 के पूर्ण संयोजन के बाद में एमएसटी टावर को 120 मीटर पीछे खसका दिया जाता है और अब पीएसएलवी C51 सुसज्ज है अपने मंच पर Minus उड़ान भरने 17 के लिए। minutes. Satellite Coming to control, director, mission mission director, Amazonia 1, ready for launch. Mission Director Roger. This is Range Operation Director to Mission Director. Range is ready for PSLV C51 Amazonia 1 launch. Mission Director Roger. This is TTC Director to Mission Director. This track network confirms readiness for supporting PSLV C51 Amazonia 1 mission. Mission Director Roger. Timing confirm 467. अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं पीएसएलवी C51 के मिशन डायरेक्टर Roger. श्री एसआर बीजू। VLCC1, LCC1. Please note timing confirmed external hold mode. अब रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, सैटेलाइट CCC, डायरेक्टर, व्हीकल Sharp डायरेक्टर, Info, टेलीमेट्री event ट्रैकिंग number डायरेक्टर ने 422, Tata अपना Lagan Paranan, सहमति Sharp दे दिया है Info. मिशन डायरेक्टर को। अब कुछ ही समय Minus पर 16 minutes. ALS ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी किया This is जाएगा। Mission Director. Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C51 Amazonia 1 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and ISRO network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C51 Amazonia 1 mission at 10:24 hours IST today, that is 28th of February 2021. Control Roger. All stations to note, Mission Director has given authorization for launch.
On your TV screens, you have just watched Shri S.R. Biju, Project Director of PSLV and Mission Director of PSLV C51 Amazonia 1 mission, giving the clearance and authorizing the launch. Authorizes to initiate the automatic launch sequence for the launch of PSLV C51 Amazonia 1 mission at 10:24 hours IST today, 28th February. Automatic launch sequence initiated for PSLV C51 launch. It is about 14 minutes 30 seconds to the launch, and the vehicle director has announced the start of automatic launch 14 sequence. minutes 30 seconds. From here on, the further activities leading to the launch will be in the autonomous mode by the automatic launch sequence. The major checkout parameters for the launch vehicle and satellite will be taken care of by the onboard computers. Speaking about the milestones that this launch is going to set, what makes this mission special is that PSLV C51 Amazonia 1 mission is the first dedicated PSLV commercial mission for the New Space India Limited, NSIL, a Government of India company under Department of Space. NSIL is undertaking this mission under a commercial arrangement with Spaceflight Inc. USA. It is also the first time that Brazil is launching its satellites from an Indian rocket. The first launch mission by ISRO for the year 2021 also marks some more milestones, like the 78th launch vehicle mission from SDSC SHAR, 53rd flight for the workhorse PSLV, and the third for the DL variant of the launch vehicle. ISRO has so far launched 342 satellites belonging to as many as 34 countries. You might recall ISRO had launched PSLV C49, a DL version with 2 strap-ons, from the first launch pad on 7th of November 2020. You can see that the senior delegation from Brazil is here to witness the launch. Actuation in progress. अभी आप अपनी स्क्रीन पर ब्राजीलियन प्रतिनिधियों को देख पा रहे हैं और उनके बगल में है डायरेक्टर NSIL श्री राधाकृष्णन. His Excellency Marcos Cesar Pontes, Minister of Science, Technology and Innovation of Brazil. On your screens now. अमेजोनिया 1 ब्राजील के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इनपे का प्रकाशीय प्रक्षेपण उपग्रह है. यह उपग्रह अमेजन क्षेत्र के निर्वणीकरण का मॉनिटरिंग तथा ब्राजीलियन प्रदेश में वैविध्यपूर्ण कृषि का विश्लेषण करने के लिए प्रयोक्ताओं को सुदूर संवेदन आंकड़े प्रदान कराकर विद्यमान संरचना को और सुदृढ़ करेगा. उपग्रह अमेजोनिया 1 का कुल भार 637 केजी का है. इसे 772 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकाली कक्षा में 98.4 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा. इसमें नित भार के रूप में वाइड फील्ड इमेजिंग कैमरास लगे हुए हैं. इसके स्वात 850 किलोमीटर का है तथा रेजोल्यूशन 60 मीटर का है. इसमें 2 सोलर पैनल लगे हुए हैं जो कि लिथियम आयन बैटरीज को चार्ज करने के काम में आएंगे. इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया है. इसका जीवन काल 4 वर्षों से अधिक का अभिकल्पित किया गया है. We are about 10 minutes 45 seconds from the launch. Let me explain about the launch vehicle configuration. This is PSLV DL version with alternate solid and liquid stages. 139 tons of solid propellant as the main booster called the PS1. It consists of 5 segments approximately 30 tons each with 2 12.2 ton solid strap-on motors alongside the main booster. Core dia 2.8 meters, thrust 4,800 kilonewtons,
action time of 109 seconds approximately. The strap-on dia is 1 meter and the thrust minus 719 kilonewtons. The second stage of PSLV is based on liquid propulsion system with 41 tons propellant loading of UH-25 as fuel and N2O4 as oxidizer. The Vikas engine develops 799 kilonewtons thrust. The third stage of the rocket is called HPS-3. Its height is 3.6 meters, diameter 2 meters and uses 7.65 tons of propellant. The fourth stage is a liquid stage which is 2.5 meters in height, 1.34 meters in diameter and 2.5 tons of propellant loading. Monomethyl hydrazine as fuel and mixed oxides of nitrogen as oxidizer. The equipment bay is on top of the fourth stage. The satellites are housed inside the payload fairing of 3.2 meters diameter. minus 9 minutes. PPV open. काउंटडाउन जारी है। अब हम 9 मिनट की दूरी पर प्रमोचन से काउंटडाउन ऑपरेशन करीब 25 घंटे पहले प्रारंभ हो चुका है। अब हम PSLV C51 से 8 मिनट 44 सेकंड की दूरी पर लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू होने से अब तक यान को पावर ऑन कर सभी तंत्रों के संचार सुनिश्चित कर लिए गए हैं। ग्राउंड स्टेशंस की रेडीनेस चेक कर ली गई है। तरल नोदक के भराव की स्थिति प्राप्त कर चतुर्थ चरण, द्वितीय चरण और RCT में प्रणोदन का भराव हो चुका है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम्स का परीक्षण पूर्णतः सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। बैटरीज चार्जिंग सुनिश्चित कर ली गई हैं। minus 8 minutes. क्रमबद्ध तरीके से सेफ आर्म को आर्म मोड में लाया जा रहा है। इन सभी कार्य को संतोषपूर्वक तरीके से सुदूर स्थल पर ही संपन्न किया जा रहा है। अब मैं आपको इस प्रमोशन से जुड़ी ट्रेजेक्टरी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं। T-2.8 सेकेंड में RCT रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर को ऑन कर दिया जाएगा। इसके बाद T0 पे प्रमोशन शुरू होगा PS1 के प्रज्वलन के साथ। 420 मिली सेकेंड के बाद ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन minus 7 minutes. का प्रज्वलन किया जाएगा। 70 सेकेंड के बाद ग्राउंड लेड स्ट्रैप-ऑन का पृथक्कीकरण हो जाएगा। इसके 40 सेकेंड के बाद PS1 का मुख्य यान से वियोजन हो और PS2 का प्रज्वलन होगा। इसके करीबन 1 मिनट के बाद ऊष्मा कवच का वियोजन होगा। अब हमारा प्रमोचन यान वातावरण के घनत्व से बाहर जा चुका होगा। 1 मिनट 40 सेकेंड के बाद PS2 का भी पृथक्कीकरण होगा। इस पृथक्कीकरण के 1 सेकेंड बाद ही PS3 का प्रज्वलन हो जाएगा। यह करीब 125 सेकेंड प्रज्वलित होकर शांत हो जाएगा। इसके बंद होने के बाद भी PS3, PS4 यह चरण एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे करीबन 107 सेकेंड तक। फिर इसके 10 सेकेंड बाद चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो जाएगा। करीबन 8 मिनट 10 सेकेंड चतुर्थ चरण अपना निष्पादन देकर शांत होगा और इसे अभिप्राय पूर्वक बंद कर दिया जाएगा। कक्षीय स्थितियां प्राप्त हो जाने पर अमेजोनिया 1 उपग्रह का कक्षा में अंतःक्षेपण कर दिया जाएगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं निदेशक सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री ए राजराजन। इस प्रमोशन में कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।
इस यान में PS4 को करीब 44 मिनट के अंतराल के बाद पुनः प्रज्वलित किया जाएगा -5 minutes. और 9 सेकंड चलकर PS4 इंजन फिर से अभिप्राय पूर्वक तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तत्पश्चात 48 मिनट के बाद पुनः प्रज्वलित कर सहयात्री उपग्रहों की कक्षा प्राप्त की जाएगी। कक्षा प्राप्त होते ही क्रमशः सभी सहयात्री उपग्रहों का अंतःक्षेपण किया जाएगा। The countdown time for this particular mission has been 25.5 hours long, during which the launch vehicle and satellite systems have been checked. The onboard batteries were charged and the liquid propellants were serviced into the reaction control thrusters, the second stage and fourth stage. Apart from this, the gas bottles are pressurized to the pre-flight levels. -4 minutes. We are about 4 meters away from the launch time. The present mission is among the longest missions undertaken by ISRO. It lasts for 7,710 seconds, that is 2 hours, 8 minutes and 30 seconds. Pyro and wall battery on. On your screens now, the launch vehicle ready and awaiting for its liftoff. Shri S. Somnath, Director Vikram Sarabhai Space Center, on your screens now. अब हम प्रमोशन से -3 minutes. 3 मिनट की दूरी पर क्रमबद्ध तरीके से काउंटडाउन आगे बढ़ता हुआ पूरे नियंत्रण तंत्र की जांच होती हुई यह सब ऑनबोर्ड कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है और आंकड़े यहां तक आ रहे हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक ब्राजील से और प्रतिनिधि यहां उपस्थित। मौसम पूरी तरह सामान्य प्रतीत होता हुआ बहुत ही अनुकूल प्रमोशन के लिए। -2 minutes. Visuals from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center. We are about 2 minutes away from the launch. Senior scientists of ISRO eagerly watching their monitors. अमेजोनिया 1 एक प्रकाशीय भूप्रेक्षण उपग्रह है जो कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ब्राजील द्वारा पहला उपग्रह है जो कि पूरी तरह अभिकल्पित, संयोजित, परीक्षित और संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा -55 seconds. All shafts armed. -50 seconds. All sequencers armed. -45 seconds. सतीश धवन सेट -40 seconds. में अमेजोनिया 1 के साथ सहयात्री के रूप में SDSC -35 seconds. में अपनी निर्धारित कक्षा की ओर अग्रसर होगा। इस उपग्रह का मुख्य कार्य -30 seconds. अंतरिक्षीय मौसम का अध्ययन तथा दूर संचार तकनीक का प्रदर्शन करना होगा। अब हम आपको ले चलते हैं सीधे लॉन्च पैड। -15 seconds. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Lift-off normal. 5 seconds. Majestic liftoff and the announcement of normal liftoff from the Range Operations Director. सफलतापूर्वक उत्थापन PSLV C51 का अपने मिशन की ओर अग्रसर। Satellites taking a ride in this mission. Amazonia 1 being the prime satellite. Stage performance normal. ROD की अभी घोषणा के अनुसार प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य होता हुआ अब प्रमोचन यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजर रहा है। पूरे नियंत्रण तंत्र सामान्य काम करते हुए The PS1 performance is according to the expectation for this mission. Both the strap-ons have ignited on ground. Separated. It's 1 minute 15 seconds into the launch. Altitude 40 kilometers. All the groundlit strap-ons are separated. Core stage will continue to burn for 1 minute 50 seconds. अपने निर्धारित पथ का अनुकरण करते हुए PSLV C51 प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य होता हुआ यह करीबन 109 सेकंड्स तक चलकर पृथक हो जाएगा मुख्य यान से। First stage separated, second stage ignited. प्रथम चरण का पृथकीकरण सामान्य। 2 minutes. द्वितीय चरण परफॉर्मेंस नॉर्मल। द्वितीय चरण प्रज्वलित हो सामान्य निष्पादन करता हुआ। द्वितीय चरण करीब 152 सेकंड तक चलेगा। About 90 kilometers altitude already attained. The PS2, the second stage of PSLV, operating currently. You can see on your screens the flight parameters. The second stage operation increases the relative velocity of the launch vehicle. The payload fairing has been separated. And the closed loop guidance also is initiated. These are the two events which are done after the launch vehicle clears the denser part of the atmosphere. Second stage performance normal. The Shah's tracking station is continuing to track, and Trivandrum station also has started to acquire the signal of launch vehicle flight. The second stage of PSLV is based on liquid propulsion system. अब प्रमोचन यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। इसका मतलब है कि वह अपने नियंत्रण के लिए एक्सेलरोमीटर्स और रेट जायरोस का उपयोग कर अपनी स्थिति प्राप्त कर उसे नियंत्रण करता है और उद्दिष्ट दिशा की ओर मोड़ता है। पूरी तरह सामान्य निष्पादन PS2 स्टेज का और निर्धारित पथ का अनुकरण करते हुए। PS2 स्टेज तरंग नोदन पर आधारित चरण है। Second stage separated, third stage ignited. अभी अभी ROD का संदेश आया है जिसमें PS3 प्रज्वलित हो चुका है। PS2 का सफलतापूर्वक पृथकीकरण किया जा चुका है। Close to 5 minutes past the launch, the PSLV third stage
is currently operating and the performance is normal. Plus 5 minutes. This stage is a solid propellant motor. Its height is 3.6 meters, diameter 2 meters and uses 7.65 tons of propellant. The third stage will continue to burn for 125 seconds, that is a little over 2 minutes. In this duration, it will add 8 kilometers to the altitude but increase the relative velocity from 3.8 to 5.8 kilometers per second for the mission requirements. तृतीय चरण का प्रज्वलन काल 124.9 सेकंड का होगा। उसके बाद यह शांत होकर PS3 और PS4 चरण एक साथ करीबन 106.9 सेकंड तक आगे चलेंगे। उसके बाद PS3 स्टेज का पृथकीकरण होगा। Plus 6 minutes. PS3 चरण का अधिकतम नोदक 24.6 टन का होता है। View from the launch view gallery and the animation of launch vehicle performance. The PS3 currently Third stage action completed. Now, though the third stage has completed its action, it continues to coast along with the fourth stage and the spacecrafts. It will do so for the next 1 minute 47 seconds, during which time there is 143 kilometers gain in the altitude as the launch vehicle loses velocity trivially. Plus 7 minutes. On your screens Vehicle now, performance normal. Director UR Rao Satellite Center, Shri P. Kunhikrishnan. अब कुछ ही क्षणों में PS3 का पृथकीकरण आप Vehicle देखेंगे। performance normal. Senior government officials are here to watch the launch. Plus 8 minutes. Third stage separated. तृतीय चरण का सफलतापूर्ण पृथकीकरण मुख्य यान से। अब करीबन 10 सेकंड पे चतुर्थ चरण का प्रज्वलन होगा। Fourth stage engine started. चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The launch vehicle is more than 1,400 kilometers away from the launch port. Fourth stage performance normal. Plus 9 minutes. Fourth stage is performing normally and the Trivandrum and Mauritius tracking stations are presently tracking. The tracking of today's mission for the launch vehicle is carried out by ISRO Telemetry, Tracking and Command Network, a host of ground stations in the flight path of the mission. Particular to this mission, 5 stations are tracking for 2 orbits. For the duration of 2 hours and 11 minutes, there is overlapping visibility of flight from these Fourth tracking stage stations. performance normal. SDSC Shar, Trivandrum, Mauritius, Antarctica for both the orbits, and the Lucknow station in India will join exclusively for the second orbit. View of the launch view gallery. His Excellency Marcos Cesar Pontes,
Minister of Science, Technology and Innovation of Brazil, and also President of Brazilian Space Agency, Mr. Carlos Moura, Plus 10 minutes. and Director INPE, Clésio Denarden, are here to witness the launch. चतुर्थ चरण अपने निर्धारित दिशा की ओर। पूरे नियंत्रण तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए। Fourth stage performance normal. अमेजोनिया 1 सैटेलाइट का अंतक्षेपण 752 किलोमीटर की सनसिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट पर 98.4 डिग्री के झुकाव के साथ किया जाना है। मुख्य उपग्रह अमेजोनिया 1 के साथ सहयात्री उपग्रह सतीश धवन सेट, यह Plus 11 minutes. स्पेस इंडिया किड्स की तरफ से ये बनाया गया है। इस उपग्रह का मुख्य कार्य रेडिएशन लेवल, अंतरिक्षीय मौसम के अध्ययन के लिए आंकड़े जुटाना तथा दूर संचार तकनीक का प्रदर्शन करना है। इसके अलावा 3 उपग्रहों का समूह, जिसे 3 शैक्षिक संस्थानों ने संयुक्त रूप से तैयार किया है, इसका नाम है यूनिटी सेट। इन उपग्रहों का उद्दिष्ट कार्य रेडियो रिले सुविधाएं प्रदान करना होगा। इन सभी उपग्रहों के अलावा 14 वाणिज्यिक सहयात्री उपग्रह सफर कर रहे हैं, जिसमें एक है सिंधु नेत्र, जो कि भारतीय तकनीकी प्रदर्शक उपग्रह है। एक उपग्रह नैनो कनेक्ट 2 नामक, तथा इसके साथ 12 अन्य स्पेस बीज नामक उपग्रह यूएसए की तरफ से तकनीकी प्रदर्शक उपग्रह हैं। यह सभी सहयात्री उपग्रह प्रमोचन यान के साथ मल्टी सैटेलाइट अडेप्टर की मदद से संयोजित कर सुरक्षित कर दिए गए हैं। Among the 19 payloads taking a ride in this mission, the prime satellite is the 637 kilograms Amazonia 1 satellite. Noteworthy aspect about this satellite is that this is the first satellite which is completely designed, integrated, tested and operated by the National Institute for Space Research, INPE, Brazil. It is an optical Earth observation satellite having wide field imaging camera with a span of 850 kilometers and a resolution of 60 meters. Amazonia 1 mission would further strengthen the existing structure by providing remote sensing data to users for monitoring deforestation in the Amazon region and analysis of diversified agriculture across the Brazilian territory. The satellite is designed for a mission life of more than 4 years. A team of scientists from Brazil had arrived to SDSC Shar and worked with Amazonia 1 for over 2 months to get it ready for the launch. 4th stage performance normal. The PS4 is about to continue for about 3 more minutes and then it will shut off, by which time it will gain the orbital parameters required for the injection of the primary satellite at 752 kilometers circular sun-synchronous polar orbit. चतुर्थ चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अब हम कुछ ही दूरी पर अपने मुख्य उपग्रह अमेजोनिया 1 के पृथकीकरण से उपग्रह 4th stage performance अमेजोनिया normal. 1 को 756 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तथा 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट पर अंतक्षेपित किया जाएगा।
For the PSLV C51 mission, the fourth stage, Plus the 15 minutes. PS4, will be in operation for 1 hour 42 minutes cumulatively, of which it will continue to burn for 508 seconds. Presently, the total burn duration is 491 seconds. Thereafter, it will shut down and restart twice to achieve the orbital parameters for the 18 Fourth stage co-passenger performance satellites. normal. चतुर्थ चरण का निष्पादन सामान्य। अब हम कक्षा की स्थितियां प्राप्त करने वाले हैं। (756 किलोमीटर का एल्टीट्यूड और 7.56 किलोमीटर पर सेकेंड की रिलेटिव वेलोसिटी। Among the Plus co-passenger 16 minutes. satellites, there is Satish Dhawan Sat built by Space Kids India. Set of 3 Unity Sats, Sindhu Netra, SAI-1 NanoConnect 2 and Space Bees, a cluster of 12 satellites from USA. अमेजोनिया 1 की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। अब किसी भी समय अमेजोनिया 1 का अंतःक्षेपण उसकी निर्धारित कक्षा Fourth पर stage होगा। thrust cutoff. चतुर्थ चरण को निर्धारित रूप से बंद कर दिया गया है। Plus Mesonia 17 1 minutes. satellite injection conditions are achieved. प्रमोशन पूरी तरह सामान्य और निर्धारित पथ पर। Mesonia 1 satellite separated. A jubilant moment, Amazonia 1 satellite has been separated and it has been injected into the intended orbit. From TTC Director, Mauritius confirm Amazonia downlink reception. This is Range Operation Director. Mission is continuing with 2 4-stage restart. After the second restart operation at 12:13 hours IST, 18 customer satellite separation will be commenced. All stations involved in operations can continue in positions. Others shall reassemble at 12 hours IST. अमेजोनिया 1 को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा पर स्थापित कर दिया गया है। सभी वैज्ञानिक गण खुशियां मनाते हुए। The mission, however, will continue for another 1.5 hours. Meanwhile, the PS4 along with the rest of the payloads will continue to coast and will restart twice and come to a lower orbit for injecting the 18 payloads. Now we take a break and join you again at 12:10 in the afternoon for updates on ongoing mission and injection of co-passenger satellites. जैसा कि पूर्व निर्धारित था, अब अमेजोनिया 1 के अंतःक्षेपण के बाद में 44 मिनट के बाद पुनः प्रज्वलन किया जाएगा PS4 का। तब तक वह अन्य उपग्रहों के कक्षा तक पहुंच चुका होगा। यह प्रसारण 12:10 को टेस्टिंग 1 2 3 My dear friends, I am extremely happy to declare that PSLV C51 successfully launched in the precise orbit of
Amazonia 1 today. In this mission, India and ISRO feel extremely proud and honored and happy to launch the first satellite designed, integrated and operated by Brazil. My heartiest congratulations to the Brazilian team for this achievement. The satellite is in very good health and solar panels are deployed and is functioning very nicely. Let me congratulate and compliment the entire Brazilian team. Also, my best wishes for the Brazil engineer for the future operations and the future life of the satellites and utility of the satellite for the Brazilian civilian community. On this happy occasion, we have with us Brazilian Minister for Science and Technology and Innovation, His Excellency Marcos Pontes. I request him to tell a few words. So good morning everyone. A very, very happy day. I would like first to congratulate all and each one of you that worked so hard to make this launch a successful launch. As you can imagine from the Brazilian side, we've been working on this satellite for many years, and all this moment represents a very important, like the top of all this effort made by so many people in our National Institute for Space Research and our Brazilian Space Agency. So for all of you that are here today, representing a team, a huge team from many years working and designing, producing all the industries that are working with this satellite. And this satellite has a very important mission for Brazil. First of all, it's one more satellite to monitor the country, the Amazon and other biomes in Brazil. As well, it represents a new era of the Brazilian industry for satellites and development in Brazil. It brings inside peace, the multi-mission platform that can be used for other satellites. So it's very important. And I could choose better place to be than here in India with all our partnership. And this is very important. This is one step, important step for this partnership that is going to grow up very much. So all of you here in India as well, I'd like to thank you very much, congratulate for beautiful launch, beautiful rocket, and all the efforts that has been done here. So we are going to work together a lot. And seeing by this this symbol here with these two flags, I believe represents exactly what we are doing today. It's the beginning of our every time more stronger relationship. So you can count on Brazil, and I'm talking here in the name of President Bolsonaro and all the Brazilian government, that we are going to work together and we are going to win together. So thank you very much. Also, my dear friends, you may be noted that this is the first commercial mission of NSIL, the commercial arm of that DOS. So I request Mr. Narayanan, CMD, to tell a few words about his business prospects. Namaskar. From us at New Space India Limited, good morning to all.
At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history when we step out from the old to the new. We are all familiar with this famous quote when India achieved its independence. In analogy, when the world was groping in the dark with questions of human survival in the peak of the COVID-19 pandemic, Indian space sector awoke to a new life and stepped out from the old to the new. ENSIL, or New Space India Limited, the nascent fledgling company under the Department of Space, a directly beneficiary of the reforms announced by the present government, thanks the government and the Department of Space for the same. While we had our presence in the earlier 3 missions of PSLV through customer auxiliary payloads, we are proud to host this launch, the first dedicated mission of ENSIL and that of the first totally Brazilian-built Earth observation satellite. We are again honored by the presence of the Honorable Minister and a former astronaut of Brazil, Marco Cesar Pontes, on this occasion. We thank the National Institute for Space Research, INPE Brazil, for the faith imposed in ISRO and ENSIL's strengths, and Mesos Spaceflight USA for facilitating the same. We sincerely acknowledge the highly professional interactions we had with the INPE team and specifically with Mission Manager Mr. Adnilson R. Silva. Team INPE, be assured our teams are already on the job to provide tracking support also from our facilities. We are also happy that we could support other auxiliary payloads also in this mission and thank the customers for their faith too. We wish our customers all the best for their just commenced missions to achieve all the desired goals. Dear Team ISRO and DOS, we are all proud of you and thank you for extending this support to ENSIL and executing the same with clockwork precision. Looking forward for many more such exciting activities in future. Jai Hind. That's all, my dear friends. Now our mission is not yet completed, and we are now going from 751 kilometer to lower altitude to inject the remaining 18 satellite. And after successful injection of the satellite, maybe after 12 o'clock, we will meet once again. Thank you very much.